We're going to tell you what's next in that political tussle up ahead here on the news with me, Shiv Arur, at 8 p.m. Thanks for tuning in. The headlines first. The Rajasthan political drama gets bigger. Congress claims denial of justice in courts ahead of Supreme Court hearing on Monday. Party to continue protests at Raj Bhavans across India. Probe intensifies in Sushant Rajput death case. Filmmaker Mahesh Bhatt and Dharma Production CEO summoned. Kangana Ranaut wants to know why Karan Johar hasn't been questioned yet. India records highest ever recoveries in a single day after over 36,000 are cured in the last 24 hours. COVID caseload inches close to the 14 lakh mark. COVID scare in Telangana. Minister K.T. Ramarao as Hyderabad mayor tests positive after attending an event with him where no social distancing norms were followed. Blueprint of Unlock 3.0 accessed. Sources say cinema halls may open with 25% seating capacity. Gymnasiums may also open after the 31st of July. The Rajasthan Battle Royale pot boiler is simmering and boiling over just hours before the case comes up in Supreme Court tomorrow. The Congress has alleged that there are bleak chances of justice from the judiciary. Imagine a mainstream party saying that. Well, the big charge comes ahead of that big hearing in the Supreme Court tomorrow. Meanwhile, Chief Minister Ashok Gehlot has sought an assembly session from the 31st of July. But so far, the governor of Rajasthan hasn't bent to that request. Take a look. डेमोक्रेसी खतरे में डाल रखी है। Amid the all-out Rajasthan face-off, Congress came out with a shocking allegation. ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायपालिका से भी अपेक्षित न्याय की उम्मीद खत्म हो गई है। The explosive allegation claiming denial of justice in courts. This came ahead of Supreme Court hearing on Monday over Rajasthan Assembly Speaker's plea challenging High Court order deferring the disqualification procedure against 19 rebel MLAs. सबसे अधिक चिंता का विषय तो यह है कि संविधान व स्थापित संवैधानिक परंपराओं को बेरहमी से भाजपा द्वारा रौंदा जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायपालिका से भी अपेक्षित न्याय की उम्मीद खत्म हो गई है। राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति संविधान की रक्षा करने में असहाय और अक्षम नजर आते हैं। Forced to hold back the acts against the MLAs by the High Court and denied an emergency assembly session, Congress plans to hit the streets against Rajasthan Governor Kalraj Mishra by staging dharnas at Raj Bhavans across the country on Monday. In 2018, the people of Rajasthan elected the Congress government. Today, BJP is conspiring to topple the democratically elected Congress government. A video tweeted by Rahul Gandhi also targeted the BJP. BJP is now trying to murder democracy in Rajasthan. ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में किस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र किया और अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने का जनमत और बहुमत को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। The BJP hit back at the Congress, accusing it of trying to arm twist and threaten the governor. इस देश में लोकतंत्र पर आघात, आपातकाल, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान ये इनकी फितरत रही है। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मेरे ख्याल से इस तरीके का जिम्मेवार व्यक्ति गृह मंत्री और मुख्यमंत्री राजभवन को घेरने की और सुरक्षा की जिम्मेवारी से बचने का बयान देता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का नकाब सही तरीके से उतर गया है। Chief Minister Ashok Gehlot meanwhile has sent a new proposal to the governor to call an assembly session from July 31st, making no mention of the trust vote but seeking to hold discussion on COVID and introducing 6 new bills. ये जो गवर्नर की पावर है, गवर्नर हाउस को बुलाते हैं चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। वो सुप्रीम कोर्ट का 2018 का जजमेंट नाबामा वाला बिल्कुल क्लियर है कि गवर्नर जो एक्ट करेगा
जैसे प्रेसिडेंट करते हैं, एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जो कहते हैं उनके कहने पे अगर उनको हाउस बुलाना है तो उनको बुलाना चाहिए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। With Rajasthan's political tussle reaching the apex court, a prolonged bitter legal battle might be in the offing. The Supreme Court will be hearing the special leave petition of Rajasthan Assembly Speaker on Monday. Whether it is the Gehlot-led faction or the pilot group which is able to withstand the desert storm will be keenly watched for. With Nasir Devankur Vadhavan in Jaipur,